Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy at your homes. I am your GK teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your GK class. So, my dear students, today we will start unit number 10, Habitat, and today I will give you a complete introduction that what is habitat, what we are going to study in this unit, and what are the different objectives that will be attained by the end of this unit. So stay tuned with me and let's move forward. So my dear students, all the student learning outcomes are given on page number 81, and these are for the parents and the teachers to understand. So by the end of this unit, all the students will be able to understand and learn these points. So my dear students, we will move forward towards lesson number 1. When we will start lesson number 1, the objective that will be attained is that the students will be able to recognize that heat and light of the sun help to sustain life on earth, which is the only planet where life exists. हमने सन के बारे में पहले भी पढ़ा है, आपने अपने यूनिट नंबर 1 में भी सन के बहुत से बेनिफिट्स पढ़े हैं. इसके शेडो से क्या होता है, इसकी लाइट से, एनर्जी से हम डायरेक्शंस इससे पता कर सकते हैं. इसकी हीट हमारे लिए, लाइट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा हम कुछ और बेनिफिट्स भी पढ़ेंगे अबाउट द सन कि कैसे ये लाइफ को सपोर्ट करती है, कैसे जो है अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर द लाइफ एग्जिस्ट. ऑल ऑफ दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 82 ऑफ योर बुक्स. एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स लेसन नंबर 2. डिफाइन द टर्म हैबिटेट. हम एक घर के अंदर कैसे आप रहते हैं और वहाँ पे आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं और कैसे एनिमल्स जो हैं वो अपना जब घर बनाते हैं तो उनको वहाँ पर जब फैसिलिटीज़ मिलती हैं तो उसको हम एक हैबिटेट उसका कह देते हैं. तो दिस विल बी स्टडीड इन लेक्चर नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 83. This will be your page where the students will be able to define the term habitat. उनको पता चल जाएगा कि habitat क्या होता है और वो उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन बता सकेंगे. Then we will move forward towards lecture number 3, and in lecture number 3 students will be able to describe the different habitats for living things, polar regions, desert, forest and aquatic. Specifically we will discuss about two of the habitats, polar region and desert. Name plants and animals that live in each of the different habitats. और polar region और desert में जो भी animals और plants survive करते हैं या जो उनका habitat, ये उनका habitat है, हम उनके बारे में भी discuss करेंगे कि कैसे वो वहाँ survive करते हैं और कैसे उन्होंने अपने आप को adapt किया है कि they can live in such a cold place and in such a warm place. So the page that is included is page number 83 and page number 84. So these will be your reading pages where we will discuss about different habitats. So from here we will move forward towards lesson number 4, and here we will describe the different habitats like forest and aquatic habitat को हम describe करेंगे. और जोन से भी plants और animals forest और aquatic habitat में रहते हैं हम उनके बारे में भी discuss करेंगे कि how they are adapted to live in this habitat. The pages that are included is page number 85 and page number 86. These will be your reading pages. From here, we will move forward towards lesson number 5, and you will be able to briefly introduce what an ecosystem is. आप बात कर सकेंगे कि ecosystem क्या होता है, कैसे जो है different plants, animals, ट्रीज जो कि एक हैबिटेट में रहते हैं, कैसे वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, कैसे वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक इकोसिस्टम जो है वो डेवलप करते हैं. दिस विल बी डिस्कस्ड ऑन पेज नंबर 86 एंड पेज नंबर 87. And from here we will move forward toward lesson number 6, which will be a project of pond ecosystem. हम एक pond जो है उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसके अंदर कौन कौन से जो है डिफरेंट एनिमल्स या प्लांट्स रहते हैं हम उनको ऑब्जर्व करेंगे, उनका आपस में क्या कनेक्शन है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे. सो दिस विल बी अ प्रोजेक्ट. इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 87 ऑफ योर बुक. फ्रॉम हेयर वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स, and this is project number 1, pond ecosystem. So we will move forward towards lesson number 7, and the students will be able to identify the environmental factors, temperature, light, water that supports life in a habitat. ठीक है,
कैसे जो है डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो एक हैबिटेट को सपोर्ट करते हैं, हम उस बारे में डिस्कस करेंगे इन लेक्चर नंबर 7. द पेज दैट इज इंक्लूडेड इज पेज नंबर 88. So from here we will move forward towards lesson number 8 and the students will be able to identify the environmental factors. यहाँ पे again हम जो है environmental factors को one by one discuss करेंगे. तो जो pages जो included हैं वो है page number 89. यहाँ पे हम soil और light को as a factor डिस्कस करेंगे कि कैसे ये दो फैक्टर्स जो हैं वो आपके हैबिटेट को किस तरीके से सपोर्ट करते हैं और कैसे ये बेनिफिट करते हैं. फ्रॉम हियर वी विल मूव टुवर्ड्स लेसन नंबर 9 और यहाँ पर आइडेंटिफाई द वे स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द वेज प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव सर्टेन फीचर्स अडेप्टेड टू देयर हैबिटेट. और यहाँ पे हम कैमल को डिस्कस करेंगे. डिफरेंट एनिमल्स जो हैं जब वो डिफरेंट हैबिटेट्स में रहते हैं तो उनके अंदर डिफरेंट अडेप्टेशंस होती हैं ताकि वो उस स्पेसिफिक हैबिटेट में सर्वाइव कर सकें. तो यहाँ पे हम कैमल को डिस्कस करेंगे कि कैसे वो डेजर्ट में ईजीली सर्वाइव कर लेता है. एंड द पेज विच इज included is page number 89 and page number 90. And then we will move forward towards lesson number 10. Identify the ways plants and animals have certain features adapted to their habitat. यहाँ पे हम fish को discuss करेंगे कि कैसे fish जो है वो पानी में आराम से रह लेती है, वहाँ सांस भी ले लेती है, खाती पीती भी है. So water habitat के अंदर कैसे fish survive करती है we will discuss on page number 90 of your books. And then we will move forward towards lesson number 11. And on lesson number 11, we will discuss about polar bears, that how they survive in such a cold climate, what are the adaptations that they have. And again, we will discuss about a plant, cactus, which is in a desert and how this plant survives in such a hot place. हम ये discuss करेंगे on page number 91. Then we will move forward towards lesson number 12 and we will discuss about lotus and pine trees कि कैसे lotus जो है वो पानी में survive कर लेता है. It survives in ponds और वहाँ उसके ऊपर बड़े बड़े flowers जो हैं वो लगते हैं. और इसके अलावा pine trees जो हैं they are in cold climate, higher mountain regions के ऊपर ये जो plant pine trees हैं ये वहाँ पर होते हैं. तो what adaptations do they have to survive in these conditions? So this will be discussed on page number 92 of your books. And then we will move forward towards lesson number 13. And in this lesson, students will be able to identify the ways human activities affect the natural habitats. कैसे जो है इंसान जो है वो natural habitats को disturb कर रहे हैं और क्या उनकी activities हैं जिसकी वजह से हमारी जो natural environment है वो disturb हो रहा है. This will be discussed on page number 93 of your books. And then we will move forward towards lesson number 14, which will be a project. Project number 2, and it will be a model making. This project is given on page number 98 of your books. Project number 2. हम यहाँ पर एक मॉडल बनाएंगे और फिर हम उसको डिस्कस करेंगे कि कैसे हम उसको जो है प्रेजेंट करेंगे और मैं आपको डिफरेंट वेज बताऊंगी. Then we will move forward towards project number 3. This is also a model making and we will, this is given on page number 98 of your books. This is your project. And then we will move forward towards the review of the lesson and I will give you a complete review of all the pages of your book and I will assess you here. Evaluate करूँगी मैं आपको assessment provide करूँगी and I will see that what you have learned from this lesson. This lesson will be extremely interesting. You will learn many new things. We will do very fun activities, make projects. So stay tuned with me. Keep everybody around you safe until then. Have a good day and Allah Hafiz.